Yes, sir. Tell me the name of the chapter. The chapter is Democratic Rights. Sorry, it's Walking of Institutions. Sorry, what is the name of the topic? Working of Institutions. Working of institutions. Okay. Yeah, got it. Give me. Today I took vaccine. Yes, sir. Today again taking another vaccination. Sir, the third one. This is the third one. On 7th, I will take my second one. Actually, I have been given a task of doing a presiding officer in election duty. Oh, Yeah. great. So Nice, man. it's in Khordha district. So that's Sir, you are in Khordha district. yeah, in Khordha district, Begunia. Place is Begunia. I think I know that place. Sir, is it a place full of empty lands? Means the lands without houses? I don't know. So I have been given the duty to handle the booth. Yeah. So So one more thing. So from means Friday, sorry, Saturday we can't have the class. So when we'll have the class on Sunday? why Saturday can't be held the class? Because it's Saraswati Puja. Oh, I knew that. Okay. We will see that. Oh, hey. Okay. So shall we start? Can you see my screen? No, not at all. Now? Yeah. Okay. Completely. So working of institutions. Let's go for it. Democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work with and within institutions. This chapter is about the working of such institutions in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. In this process, we come across three institutions that play a key role in major decisions. Who are those? Legislature, executive, and judiciary. You have already read something about these institutions in earlier classes. Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger questions. In the case of each institution, we ask, what does this institution do? How is this institution connected to other institutions? What makes its functioning more or less democratic?
the basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. Sometimes we compare these with similar institutions in other democracies. In this chapter, we take our examples from the working of the national level government called the central government, union government, or just government of India. While reading this chapter, you can think of and discuss examples from the working of the government in your state. Now, the chapter 4, working of institutions, is indicating about which of the institutions? Now, telling about those of the institutions which play the major role in major decisions. अगर देखा जाए, so institutions किस हिसाब से काम करते हैं, right? Democratic country मतलब लोगों की वजह से, right? Means एक country में एक particular election होता है, right? So demo means people, क्रासी means rule. So लोगों के बेस के ऊपर ही रूल होता है, right? So लोग ही रूल करते हैं. It's not just about people electing their rulers. लोग सिर्फ अपने rulers को elect नहीं करते हैं, मतलब उनको खड़ा नहीं करते हैं. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. So अगर लोग rulers को खड़ा करते हैं democratic country में, तो democratic country में means उन rulers को भी कुछ rules follow करने पड़ते हैं. Some rules and procedures उनको follow करने पड़ते हैं. They have to work with and within institutions. So उनको means institution के साथ काम करना है और institution के अंदर में काम करना है, right? So ये जो chapter है, it is about the working of such institutions in a democracy. तो ये chapter उन्हीं institutions के ऊपर है, right? वही institutions जो democratic country में होते हैं, right? So we try to understand this by looking at the institution, by looking at the manner in which जो बड़े-बड़े decisions होते हैं, जो कि लिए जाते हैं या तो means implement होते हैं, right? हमारे देश में. So वो कैसे होते हैं और ये institution कैसे उसको implement करते हैं और कैसे वो लेते हैं decisions, right? उसके अलावा we also look at how disputes regarding these decisions, right? So disputes, conflict, problems, barriers, obstacles, ये सारे जो problems हैं, right? किसके ऊपर होते हैं? ना जो decisions लिया जाता है उसके ऊपर होते हैं, right? So कोई एक decision लिया गया, so कुछ लोग agree किए, कुछ लोग disagree किए, तो ये dispute होने लगा, right? ये कैसे solve होता है, right? So और ये सारे जो चीजें होते हैं means डेमोक्रेटिक कंट्री में, राइट? कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है, कोई पर्टिकुलर डिसीजन इंप्लीमेंट होता है, कोई डिसीजन डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है. सो इस सब को हेल्प करने के लिए हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजंस, बड़े-बड़े डिसीजंस लेने में, राइट? कौन-कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, राइट? अगर लेजिस्लेचर देखा जाए तो मिनिस्टर्स को कहा जाता है, इज नॉट इट? या एग्जीक्यूटिव को अगर कहा जाए तो ये सारे मींस ब्यूरोक्रेसी को रेफर किया जाता है, मतलब जितने भी सारे बड़े-बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो काम करते हैं ऑफिस में, राइट? वो चाहे आईएएस हो या आईएफएस हो, राइट? ये जितने सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, सो ये भी मेजर डिसीजंस लेते हैं. एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज जुडिशियरी, राइट? लॉ. सो इस हिसाब से ये तीनों इंस्टीट्यूशंस किस हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बड़े-बड़े डिसीजंस लेने में. सो
You have already read something about this institute. पहले भी हमने पढ़ा है इस सारे institutions के बारे में, तीनों institutions के बारे में पहले classes में. Here we shall, means only we will discuss the summary of it, right? So, and उसके बाद जो बड़े-बड़े questions हैं, larger questions हैं, उनका answer भी देखेंगे. In the case of each institution we ask, हर एक institution को एक question पूछा जाता है. What does this institution do? ये institution करते क्या है? How is this institution connected to the other institutions? So, judiciary किस हिसाब से executive के साथ, executive किस हिसाब से legislature के साथ means connected हुआ है. What makes its functioning more or less democratic? किस हिसाब से, right, means ये सारे institution means ज्यादा democratic हैं, right, so या कम democratic हैं, right, so कैसे ये लोगों के साथ है. The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. किस हिसाब ये तीनों के तीनों institutions government के जो काम है उसको कैसे continue करते हैं और carry forward करते हैं, right? Sometimes we compare these with similar institution in other democracies. So उस हिसाब से यहाँ पे example भी लिया गया है, right? So कैसे नेशनल लेवल गवर्नमेंट के साथ ये काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करते हैं. सो या तो सिर्फ गवर्नमेंट इंडिया के साथ, राइट, कैसे ये रहते हैं. मीन्स ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये सारे एग्जांपल्स और मीन्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट में कैसा काम होता है उसके बारे में भी पता चल जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, how is a major policy decision taken? तो पहला सब टॉपिक है कि मेजर पॉलिसी डिसीजन कैसे लिया जाता है, किस हिसाब से मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है. अ गवर्नमेंट ऑर्डर, सो एक गवर्नमेंट ऑर्डर यहाँ पे दिया गया ऑन अगस्त 13, 1990, राइट. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया. It was called an office memorandum, right? So officially एक memorandum था, right? Like all government orders, जैसे ही बहुत बड़े-बड़े means government orders होते हैं, right? उस हिसाब से ये भी एक government का order ही था. It had a number and is known by that office memorandum number 36012 O.M.NO. इसका मतलब ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012 by 31 by 90, right, EST SCT, dated 13/8/1990, right. The joint secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed the order, right. So who signed the order? The joint secretary, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, right. So यहाँ पे joint secretary है जो कि means Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension Department से हैं जिन्होंने साइन किया है. It was quite short, बहुत ही छोटा सा मीन्स एक ही पेज के अंदर था. इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर. सो जैसे कि एक ऑफिस में सर्कुलर होता है, स्टाफ को दिया जाता है, स्टाफ लोगों के लिए होता है, उस हिसाब से ये ऑर्डर भी हुआ था. और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल. द गवर्नमेंट इश्यूज hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. So बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मेमोरेंडम, बहुत सारे सर्कुलर्स, बहुत सारे मीन्स ऑर्डर्स हर दिन डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, डिफरेंट मैटर्स के ऊपर बनाया जाता है और शेयर भी किया जाता है, स्प्रेड भी किया जाता है. लेकिन ये जो ऑर्डर था बहुत ही इंपॉर्टेंट था. कैसे ना, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए थे और बहुत सालों तक हुए थे, राइट.
जैसे देखते हैं कैसे, लुक इनटू इट। देखो यहाँ पे दिया है जीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर सो एंड सो, डेटेड 13/8/90, सब्जेक्ट 27% रिजर्वेशन फॉर SEBC, socially and educationally backward classes in civil post or services. So 27% रिजर्वेशन SEBC को दिया गया है, किस चीज में? ना सिविल पोस्ट में और सर्विसेज में। In a multiple undulating society like ours, early achievement of the, जो लिखा गया उसको मैं पढ़ रहा हूँ, in a multiple undulating society like ours, early achievement of the objective of social justice as enshrined in the constitution is a must. The second backward classes commission, called the Mandel Commission, was established by the then government with this purpose in view, which submitted its report to the government of India on 31st December 1980. Government have carefully considered the report and the recommendation of the commission in the present context regarding the benefits to be extended to the socially and educationally backward classes, as opinion by the commission, and are of the clear view that at the outset certain weightage has to be provided to such classes in the services of the UP union and their public undertaking. Accordingly, orders are issued as follows. तो यहाँ पे दिया गया है कि कितना परसेंट देना चाहिए SEBC को, 27%। सब्जेक्ट क्या है? रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग। सो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। ये एक ऑर्डर इश्यू हुआ है कि 27% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द SEBC पीपल, राइट? तो जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए थे, राइट? दिस SCBC means scheduled caste and the backward class. No, it is stated that means you can see here it is pointed socially, not scheduled caste. That is SC, Okay. ST. SC is called as a scheduled caste. ST is called as a scheduled tribe. Scheduled tribe. The SCBC is called as a socially and educationally backward classes, right? जो socially society से और educationally, right, backward है, right? उनके लिए, Yeah. जैसे कि हम कहते हैं ना other backward class, OBC. Other backward class, OBC, yeah. हाँ, so state में आपका SCBC यूज होता है, जहाँ सेंटर में OBC यूज होता है, right? तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया है दिस ऑर्डर अनाउंस्ड। ये ऑर्डर क्या अनाउंस करता है? अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, एक बहुत बड़ा पॉलिसी यहाँ पे मीन्स, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन हुआ। कौन सा पॉलिसी डिसीजन हुआ? एक पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ कि आज से 27% SEBC रिजर्व हुआ। It said that 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for the SEBC. SEBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. Government के हिसाब से वो backward है, right? So पैसे में भी backward है, right? Economically, right? And educationally and socially, right? The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste. पहले क्या था ना, सिर्फ scheduled caste या तो scheduled tribes को means job reservation था। लेकिन अभी क्या हुआ? Now a new third category called SEBC was introduced. Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Others could not compete for these jobs. बाकी लोग इसमें compete नहीं कर सकते, right? So the decision makers who decided to issue this memorandum, जो भी यहाँ पे एक joint secretary है जिन्होंने ये decision लिया, right? So जो भी इस decision को decide किया, जो भी ये policy decide किया, so और ये memorandum issue किया, clearly such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. So एक आदमी से तो नहीं होगा. The officer was merely implementing the instruction given by the Minister of
personal public grievance and pensions, of which the department was a part. तो होता क्या है, किसी बड़े लोग ने मीन्स ये इंस्ट्रक्शन दिया, so who is that means higher person, right? You can say that it must be given by the Minister of Personal Public Grievances and Pension. Definitely Minister of Personal or Public Grievances and Pensions, वहां से ये लेटर आया होगा, और उसी लेटर को मीन्स किसने, जॉइंट सेक्रेटरी या तो ऑफिसर ने इम्प्लीमेंट किया है, राइट? सो वी कैन गेस दैट सच ए मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व्ड अदर मेजर फंक्शनरी. सो इसका मतलब सिर्फ ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है. Yeah, you would find out that legislatures also involved here, right? We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered. So कुछ main points है. So कौन सबसे head है? President is the head of the state and is the highest formal authority in the country. सबसे बड़ा president ही है, right? Next is Prime Minister is the head of the government, right? So country का head, right? And country का head president है. Prime Minister is the head of the government and actually exercises all governmental powers. So Prime Minister सारे governmental powers को exercise करते हैं. He takes most of the decisions in the cabinet ministers. Cabinet में सारे decision वही लेते हैं. This is the second. Third क्या है ना, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस. पार्लियामेंट 2 हाउस, राइट, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके अलावा प्रेसिडेंट को भी यूज किया जाता है. मतलब पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ दीज 3, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स. सो प्राइम मिनिस्टर किसको सपोर्ट करना चाहिए ना, मीन्स लोकसभा को. अगर बहुत सारे मेंबर्स एक ही चीज को सपोर्ट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनको सपोर्ट करना चाहिए. सो वेयर ऑल दिस पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम. तो क्वेश्चन ये आता है, जो पॉलिसी यहाँ पे दिया गया है कि 27% रिजर्व फॉर द एससीबीसी, तो क्या ये मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सो ये सारे इन्वॉल्व हैं इस डिसीजन में? डू यू थिंक इट इज पंडा? Yeah, I think so. Okay, let us find out. Now, look into it. This office memorandum was the culmination of a long chain of events. This office memorandum was the culmination. Culmination means connected or associated of a long chain of events. The government of India had appointed the SCBC, right, Second Backward Classes Commission in 1979. So 1979 में एक कमीशन बिठाया गया, गवर्नमेंट ने बिठाया. इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल. सो उस टाइम पे उसको हेड करते थे और उसका ऑथोरिटी कौन थे, बीपी मंडल थे. हेंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन. तो जिसके वजह से इसको कहा जाता था मंडल कमीशन. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educational backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancements. Right? तो यहाँ पे एक मैसेज दिया गया था कि एक क्राइटेरिया बनाया जाए, किसके लिए ना, उन्हीं लोगों के लिए जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, राइट, इंडिया में, और कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए जिसके वजह से उनका डेवलपमेंट हो, राइट. द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980, राइट. कमीशन ने क्या किया ना, अपना जो रिपोर्ट दिया वो 1980 में रिपोर्ट दिया, राइट, एंड मेड मेनी रिकमेंडेशन. सो कौन सा कमीशन, मंडल कमीशन, अपना रिपोर्ट दिया 1980 में, एंड मेड मेनी रिकमेंडेशन, बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी बनाए, right. One of these was that 27% of government jobs be reserved for these people, right, or these classes. So एक recommendation क्या था, 27% reserve होना चाहिए. The report and recommendations were discussed in the parliament. Parliament में उसके ऊपर discuss भी हुआ.
For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the commission's recommendation. बहुत सालों तक पार्लियामेंट जो मेंबर्स थे और पार्टी, बहुत सारे जो पार्टी थे, उन्होंने डिमांड भी किया और फोर्स किया कि ये जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट. Then came the Lok Sabha election of 1989. 1989 में जो लोक सभा इलेक्शन हुआ, in its election manifesto, right? So election के डिस्प्ले में और इलेक्शंस मींस अवेयरनेस के टाइम पे जनता दल promised that if voted to power, जनता दल ने ये कहा कि अगर वो पावर में आते हैं, it would implement the मंडल कमीशन रिपोर्ट. सो मंडल कमीशन का जो पॉलिसी है उसको वो डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगे. द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन. सो इलेक्शन के बाद जनता दल पावर में आया और उसके वजह से उन्होंने ये इंप्लीमेंट भी किया, राइट. जिसका लीडर कौन थे? वीपी सिंह, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर भी थे. सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट. तो उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुआ, राइट. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. So next is called as the president of India in his address to the parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandel Commission. पहला चीज तो ये है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया भी पार्लियामेंट में, कि ये जो ये जो पॉलिसी बनाया गया है और ये जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ, इसका इंटेंशन क्या है. सेकंड, 6 अगस्त 1990 में द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन, राइट. 6 अगस्त 1990 में यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन, एक डिसीजन लिया कि इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको? ये जो रिकमेंडेशन को, ये जो पॉलिसी को. नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस को ये इन्फॉर्म किया फॉर्मली, राइट, कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. The decision of the cabinet was sent. The decision of the cabinet. So cabinet के ऊपर decision देना था. So the decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training, right? So the senior officers of the department, जो बड़े-बड़े senior officers हैं, so उन्होंने drafted बनाया an order in line with the cabinet decision and took the minister's approval. Ministers का जो approval भी लिया. An officer signed the order on behalf of the union government. Union government के behalf में कोई एक officer उसके ऊपर sign भी किया. And this was how office memorandum was burned on 13th August 1990. So for the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. Newspapers and magazines. Now you could see no reservation for this quota, right? Amul, the Riot test, reserved for this outstanding butter classic, Amul. So you Amul advertisement. Amul advertisement. Yeah, Amul, always. Newspaper and magazines were full of different views and opinions on this issue, right? Were full of different views and opinions on this issue, right? So हर पेपर में, हर मैगजीन में उसके ऊपर बड़े-बड़े चर्चा थे. It led to widespread protest. Even इसके वजह से मीन्स बहुत सारे जगहों पे प्रोटेस्ट भी हुआ, काउंटर प्रोटेस्ट भी हुआ, some of which were violent. कुछ लोग तो aggressive हुए. People strongly reacted because this decision affected thousands of job opportunities. Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservation. So job reservation के वजह से inequalities भी होता था. They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not sufficiently been represented in government employment. So others
believed that or felt that this was unfair, right? लोगों को ये समझ में आता था कि ये अनफेयर है. क्यों ना? आज it would deny means it would not what do you can say that it would stop equality of opportunity, right? Equality of opportunity को ये क्या करता है? Stop करता है. To those who did not belong to backward communities, they would be denied jobs even though they could be more qualified. लोग अगर ज्यादा भी क्वालिफाइड हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि कुछ जॉब्स हैं जो कि SC, BC, SC और ST के लिए मीन्स हैं. अगर कोई एक SC, BC या तो SC, ST आपके नीचे है और उसका स्कोर समाव उतना ही है और उससे थोड़ा 1-2 मार्क कम है, फिर भी उसको वो जॉब मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा. So that's what they would be denied jobs even though they could be more qualified. Some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity. कुछ तो ये सोचने लगे कि इसकी वजह से कास्ट फीलिंग्स आएगा लोगों में और नेशनल यूनिटी में भी प्रॉब्लम आएगा. सो टुगेदरनेस, नेशनल टुगेदरनेस में भी प्रॉब्लम आएगा. In this chapter we won't discuss whether the decision was good or not. So यहाँ पे हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि वो सही था या गलत था. We only take this example. कौन सा example? The example of means taking policy of SCBC to 27% reserved in job. We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. Who resolved this dispute? You know that the Supreme Court and the High Courts in India settle disputes. So, who resolved this dispute? So, if you find out that now they have implemented the policy, now the policy is in dispute. Now, who resolved this dispute? You know, the dispute can be resolved, right? Supreme Court and the High Courts in India, they settle disputes. Now you come to the judicial matter, right? Arising out of governmental decisions. So government ने कुछ decision लिया जिसके वजह से means dispute हुआ और dispute को court को लाया गया. Supreme Court and High Courts in India. Some persons and association opposed to this order filed a number of cases in the court. Court में बहुत सारे cases file किया गया. They appealed to the courts to declare the order invalid. So इस order को court invalid order करे and stop its implementation. So and इसका implementation भी ना हो, right? The Supreme Court of India bunched all these cases together. So सारे case को इकट्ठा किया. This case was known as the Indira Soni and others versus Union of India case, right? Indira Soni and others versus Union of India case. 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both sides by a majority, right? So the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid. So 1992 में, right, ये डिक्लेयर हुआ कि ये जो ऑर्डर है वो वैलिड है. और किसने किया? ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने. कितने जज उसको हर्ड के मींस इस केस को सुने? ना 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट? एट द सेम टाइम the Supreme Court asked the government to modify its original order. Original order को थोड़ा modify किया जाए. It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. जो लोग backward classes में हैं लेकिन अच्छे खासे हैं, right? Well-to-do, पैसे वाले हैं लेकिन backward classes के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी जॉब मिलना चाहिए. Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 8 September 93. The dispute therefore came to an end. And this policy has been followed
since then, मतलब उस दिन से आज तक ये चलता ही जा रहा है कि 27% job reservation is made for whom? For the SCBC. Am I clear? But what is that memorandum? Office memorandum, it means office notice, memo. Oh, ये एक ऑफिस नोटिस memory. है या ये एक पॉलिसी बनाया गया जिस पॉलिसी को सर्कुलेट करने के लिए सरकारी ऑफिस में जो बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, ये ऑर्डर पास करते हैं और सारे जगह में ये ऑर्डर पहुंचता है, जितने भी ऑफिशियल, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, राइट, सो सारे जगह को ये पहुंचता है, न्यूज़पेपर में भी रिलीज होता है, राइट, न्यूज़पेपर में भी रिलीज होता है, न्यूज चैनल में भी आता है, राइट. So each and every department sees that, signs that, and passes to the other departments. Am I clear? Yeah. It's a notice. Okay. So, okay. Now, next is called as a need for political institution. राइट, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको एक कुछ टाइम देता हूं, आप इसको पढ़िए, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी उसके ऊपर डालूंगा, ठीक है? गो फॉर इट. Let me bring my bike, actually it's in outside. Okay, sir. And so let me go to washroom and come back. Please.
Are you there? Hello? ସେ 3,500 ଟଙ୍କା କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଦେଖ ନିଜ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ସାଂଘାତିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ୟାଲୋ ଆର୍ ୟୁ ଦେୟାର ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. Yes, sir. so I think ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ କଣ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସିନା ଦେଖେଇବୁ କେନ ଜାଣି ସଂଘ ମିତ୍ର ସାବତ ଓହୋ ସଂଘ ମିତ୍ର ସାବତ
Somebody from Sanghamitra Sawat. Okay. Yeah. I think your mother means what is her name? Chris Mama has sent gave my number to, has given my Olu has given my number to somebody. Sanghamitra. His son. Shared your number with my friend. Please for his son. Okay, sure. For his sons only. Okay, no issue. Ready? Shall I ask you a question? Yeah. Go. Wait. Wait a minute. First question. Yeah. Which institution can make changes to an existing law of the country? Because I think so just a minute. Just now. So give me the options. I don't have the options. The parliament. Okay. The parliament is the final authority for changing laws in our country. So you told institution, na? Yeah, So institution, it means obviously it goes to the legislature, right? Yeah. So legislature means what? It's referring to the parliament, right? So if one person wants that he cannot change it. It is the parliament. So means Lok Sabha, for which the prime minister has to go for. Is not it? मैंने आपको क्या कहा था कि लोकसभा के जितने भी मेंबर सपोर्ट करें, अगर ज्यादा मेंबर सपोर्ट करते हैं, राइट, तो प्राइम मिनिस्टर उनको सपोर्ट करेंगे, राइट. उसी के बेस पे अगर देखा जाए, अगर लोकसभा के जितने सारे मेंबर्स हैं वो अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी सपोर्ट नहीं करेगा, है कि नहीं? तो हो गया ना, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर चेंजिंग लॉज इन आवर कंट्री, क्योंकि प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस थ्री आर देयर इन द पार्लियामेंट, है कि नहीं? ओके. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज लोकसभा? Lok Sabha, it is the parliament of the country, of our country, India. No, Lok Sabha is the lower house. Lok Sabha, it is the lower house of the Indian parliament, which is directly elected by the people. लोगों के द्वारा directly elect किए गए जो ministers होते हैं, right, जो exercises the real power on behalf of the people. लोगों के बदले जो real power exercises होते हैं, जो ministers हैं उनको elect जो लोग करते हैं, directly elect करते हैं, उनका जगह है ये लोकसभा, right, which is called as a lower house of the Indian parliament, जो कि directly elected by the people and exercises the real power on behalf of the people. समझ में आया लोकसभा? Yes, sir. Now, who presides over the joint session of parliament? So कौन पार्लियामेंट के जो जॉइंट सेशन है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट. स्पीकर, हाँ. Who presides over the joint session of parliament? ना लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो प्रिजाइड्स करते हैं जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को. Who appoints the judges of Supreme Court? So judges are appointed, I think, by the president. Yes,
The judges of the Supreme Court are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. इसका मतलब प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके साथ उनका एडवाइस लेके, राइट, और उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद मीन्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि वो जजेस को अपॉइंट करे. ठीक है. Yeah. So which is known as the apex court of India? Which is known as the apex court. Yeah. So apex court, Supreme Court. Yes. ठीक है. ठीक है, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. So we'll keep close here. Till then, bye bye. Thank you. Bye, sir. Good night, sir. Good The night. next class will be on. It will be on tomorrow is Friday. Probably not on Sunday because Sunday I do have a training of. So tomorrow. Tomorrow possibly I can do. Okay, if possible. Yeah. Bye for now. Thank you. Meet Bye, you in sir. the Good next night. class. Bye bye. So tomorrow actually I'm free at 10 o'clock. Okay. Okay. If you want, we can. Okay. Bye. Bye, sir. Good night, sir.